Hi friends, welcome back to my channel Learning Made Easy. Now this is again for 10th standard. This video is for 10th standard and again this video has been requested a lot and it is chapter wise Muhavre. Now Muhavre is there apart from your chapter wise, there are Muhavre in your grammar also, which I think there are 100, 200 or maybe more than that plus I don't know how many. There are many Muhavre in your grammar part. To learn all of them, of course, it is impossible. So you must learn these chapter-wise muhavre because not all chapters has muhavre in it. Very few chapters have them. So try learning all of them and learn, choose or select and learn from your grammar part also. Few of them. Of course, you can't remember all of them. Okay, so let's begin the video that has been requested a lot and you were waiting. Of course, boards are nearing and I understand your concern to get these videos. So let's begin chapter wise muhavre. Now the first chapter I have included is Bade Bhai Sahab. Most of the muhavre is seen in this chapter. Now muhavre has been written in bold, as you can see it is in bold letters, okay, and then you have meaning on its right side and the next line is a sentence which is made on the basis of the muhavre given. Okay, the sentence is written only to make you understand. You don't have to learn the sentence. You just have to learn the meaning. Let's begin. Pran sukhna. Pran sukhna meaning is dar lagna. Dar lagna. Dar lagna means to get scared. Okay. Now the sentence here, to make it more clear. रात में बाग से घर लौटते समय भेड़िए को देखकर रामलाल के प्राण सूख गए. So here the word प्राण सूखना has been used. So रात में, at night, बाग से घर लौटते समय, Ramlal, a person was returning from Bagh, you can say a garden or a park. From the park, Ramlal was returning to where? To his house. Okay. He saw Bhediya. Now what is Bhediya? Bhediya means a wolf. So he saw a wolf and what happens? Pran sukh gaye means dar lagna. He got scared. Okay. Next one. Hasi khel hona. Okay, हंसी खेल होना, छोटी मोटी बात होना. The meaning is छोटी मोटी बात होना means a very silly things happened, very silly something has happened, not very serious one. Okay, let's see the sentence to make it more clear. तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे बिटिया का विवाह कोई हंसी खेल हो. See, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो. One person is having a conversation with another person and he's saying that you are talking in such a manner as if, okay, जैसे as if बिटिया का विवाह कोई हंसी खेल हो. As if your daughter's vivah, marriage, is something hasi khel, is a very very light thing, means not a very serious thing. You are talking as if you don't care about your daughter's wedding because you take it very lightly, when it is not. Marriage is not a small thing. Okay, that is what hasi khel hona means. Next is आंखें फोड़ना. आंखें फोड़ना meaning बड़े ध्यान से पढ़ना. To read very in a concentrated manner. Okay, to have concentration, ध्यान, concentration and to read. Okay, पढ़ना. Let's see the sentence. भाई रमेश को तो परीक्षा में प्रथम आना ही था. आखिर साल भर आंखें फोड़कर पढ़ाई की है. So a person is again talking to another person and saying that, listen brother, Ramesh would have anyways got first in class. Pratham, first in the exam, pariksha. You don't have to learn the sentence, okay? I'm just making it clear. आखिर साल भर आंखें फोड़कर पढ़ाई की. The whole year he was आंखें फोड़कर he was learning. Okay, आंखें फोड़कर, how did I say? The meaning is a very focused, having a lot of concentration. That is how Ramesh was studying. So he had to get first in the class, in the exam. Okay, let's see the next one. गाड़ी कमाई. गाड़ी कमाई meaning मेहनत की कमाई. गाड़ी कमाई meaning is मेहनत की कमाई. मेहनत means effort. कमाई means earning. Okay, earnings of the effort you put is the meaning. Sentence. सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, उसका तो दिल ही टूट गया. In Suresh दुकान, shop, चोरी क्या हुई. Just a theft happened in the shop of Suresh. उसका दिल ही टूट गया and he has his heart broken. He has got his heart broken just because a theft happened in his shop.
आखिर उसकी गाड़ी कमाई थी, कोई हराम की कमाई नहीं थी. Anyways, it must be because उसकी गाड़ी कमाई थी, means it was his earnings of his effort he had put in the shop, his effort he had put for the job. So the earnings were of that, and that is why he was very sad. Okay, कोई हराम की कमाई नहीं थी means he was not earning in any bad manner, okay, by doing any bad kind of job. Okay, he had put his real effort into it, and he had earned some money which has been taken away by the thieves from his shop. Next one, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना. ओके, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, हृदय पर भारी आघात लगना. जिगर here is heart, टुकड़े टुकड़े होना to become pieces. The meaning is हृदय पर भारी आघात लगना means some serious shock or something has happened on your हृदय, on your heart. Okay, something very bad has really shocked you. Okay, आघात होना, you are आघात लगना, you are in a shock because of something that bad has happened. Let's see the sentence. बेटे की शहादत की खबर सुनते ही वीरपाल के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए. बेटे की शहादत, शहादत means actually dying, a martyrdom, okay, dying because of some kind of sacrifice, or here you can just think it is a death. Okay, so listening to Veerpal, a person's son's death, bete ki shahadat, what happens? His jigar ke tukde tukde ho gaye. His heart has been in shock, okay, because of getting to know such a news. Next, himmat tootna. Himmat tootna. Okay, himmat means a confidence you have, it gets broken. Tootna. Meaning is sahas samapt hona, means whatever confidence you had, it has all gone. फिनिश्ड, समाप्त, फिनिश्ड. भाई जब से दुकान में आग लगी और मेरा सारा सामान जल गया, तब से तो मेरी हिम्मत टूट गई है. सो ब्रदर, व्हेन माय शॉप हैज़ गॉन बर्न्ड, दुकान में आग लगी और मेरा सारा सामान जल गया. माय एंटायर थिंग्स ऑफ वट एवर वर देयर इन द शॉप, इट हैज़ गॉट बर्न्ड, जल गया, तो मेरी हिम्मत टूट गई. एंड नाउ आई हैव लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस. ओके, नेक्स्ट, जान तोड़ मेहनत करना. जान तोड़ मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना. जान तोड़ मीन्स टू ब्रेक योर लाइफ इटसेल्फ, मीन्स अत्यधिक मीन्स वेरी परिश्रम करना. परिश्रम, एफर्ट, टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, दैट इज व्हाट जान तोड़ मेहनत करना. मेहनत अगेन एफर्ट ओनली, परिश्रम ऑल्सो एफर्ट. सेंटेंस, लाला जी अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, जान तोड़ मेहनत करूँगा लेकिन आपकी एक एक पाई चुका कर रहूँगा. सो अ पर्सन इज टॉकिंग टू लाला जी कि अपने पिता की सौगंध खाकर, आई एम प्रॉमिसिंग ऑन माई फादर. ओके, वी प्रॉमिस बाय टेकिंग समवन्स नेम, राइट? सो सौगंध खाना मीन्स टू प्रॉमिस. सो आई टेक प्रॉमिस ऑन माई फादर एंड आई एम टेलिंग यू, लाला जी, जान तोड़ मेहनत करूँगा, आई एम गोइंग टू पुट अ वेरी एफर्ट इन टू इट, लेकिन आपकी एक एक पाई चुका कर रहूँगा. एंड बट आई विल पे यू इवन वन सिंगल कॉइन, वट एवर यू हैव स्पेंट, आई विल पुट एफर्ट एंड गिव इट यू बैक. ओके, एक एक पाई मीन्स ईच एंड एवरी कॉइन्स, वट एवर यू हैव स्पेंट, आई एम गोइंग टू रिटर्न इट टू यू. हाउ? जान तोड़ मेहनत लगाकर, बाई पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट. नेक्स्ट, दबे पाँव आना. दबे पाँव आना मीनिंग चोरी चोरी प्रवेश करना. चोरी चोरी मीन्स स्लोली स्लोली प्रवेश करना, टू एंटर. सो दबे पाँव आना मीन्स to walk slowly. Dabe pav actually means a feet that has been pressed on the land, like how you walk slowly without making a lot of noise. Okay, let's see the meaning. सतीश जब बाहर शराब पीकर लौटा तो घर में दबे पाँव घुसते समय पिता ने पकड़ लिया और बहुत खरी खोटी सुनाई. Okay, so Satish is a person who has got drunk. Sharab means liquor. So now Satish has had liquor and he's coming inside, and what happens? पिता ने पकड़ लिया. दबे पाँव घुसते समय, he was actually walking slowly into the house so that nobody knows. But then father catches him, पकड़ लिया, और बहुत खरी खोटी सुनाई means, खरी खोटी सुनाना is again actually a मुहावरे. खरी खोटी सुनाई means he started scolding him. Okay, you can just remember this one also because as I said, मुहावरे can come from your grammar part. Next, गुड़ किया खाना. गुड़ किया खाना meaning डांट सहना. डांट means scolding, सहना means you just keep quiet and you are actually listening to everything. Okay, you are calm and you're listening.
somehow you're just, sehna means you're somehow listening to this, okay, you're just calm, you're not saying anything. ओके, डांट सहना मीनिंग नौकरी, सॉरी सेंटेंस, नौकरी में तो साहब की 1000 घुड़कियाँ खाकर भी चुप रहना पड़ता है, रोजी रोटी का मामला जो ठहरा. सो नौकरी में, इन अ जॉब, साहब की, योर बॉस, 1000 घुड़कियाँ, यू हैव टू लिसन टू योर बॉस, थाउजेंड्स ऑफ स्कोल्डिंग्स, ओके, घुड़कियाँ खाकर मीन्स स्कोल्डिंग्स, फिर भी चुप रहना पड़ता है, बट वी हैव टू कीप क्वाइट, यू कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ योर बॉस. वाई? बिकॉज रोजी रोटी का मामला होता है. रोजी रोटी मीन्स इट इज़ द थिंग, मामला मीन्स अ थिंग, इट इज़ अ थिंग अबाउट वॉट, about your rosy roti, your daily earnings. For your daily earnings, you have to keep quiet in front of your boss. Next, आड़े हाथों लेना. आड़े हाथों लेना meaning कठोर व्यवहार करना. आड़े हाथों लेना, कठोर व्यवहार करना. कठोर, a very difficult, harsh, and व्यवहार, your behavior. Okay, so a very harsh behavior, showing a very harsh behavior is आड़े हाथों लेना. Sentence, रमेश मेधावी छात्र है लेकिन गलत संगति पे में उसका परीक्षा परिणाम खराब आया तो अध्यापक जी ने उसे आड़े हाथों लिया. सो रमेश मेधावी इज़ अ स्टूडेंट हु है, लेकिन गलत संगति में उसका परीक्षा परिणाम खराब आया बिकॉज ऑफ हिज his whatever, I mean, he was not very serious during his exams. And galat sangati means he was some kind of not being serious in exam. Okay, he was actually very playful at that time. There was some circumstance due to which he didn't get good result. Okay, galat sangati, there was some circumstance due to which pariksha parinam, exam results were not good. So what did his adhyapak do? Teacher aade hathon liya. Means he showed, a teacher was in teacher showed a very harsh behavior to Ramesh Medhavi. Next, घाव पर नमक छिड़कना. घाव पर, घाव means wound. On wound, when you put salt, namak, what happens? You can understand. It hurts more. So the meaning is दुखी को और दुख देना. A person who is already sad, okay, when a person is already sad and you make him more sad, that is what घाव पर नमक छिड़कना. मीनिंग, सॉरी, सेंटेंस, एक तो लाला शामिल व्यापार में नुकसान की वाफह से पहले ही दुखी थे, ऊपर से सेठ दुनीचंद ने नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें हराकर उन्हें घाव पर नमक छिड़क दिया. सो there is a Lala Shamil, a person. So his vyapar, his business was already in nuksan, in loss. Okay, now what did Seth Dunichand do? This is another person. Nagar Vyapar Sangh ke adhyaksh. Okay, there is their local business head. Okay, adhyaksh means or head, or you can say a judge. Pad ke chunav mein. So he was selecting, the Seth Dunichand was actually selecting a person for business head. And what did he do? Seth Dunichand actually didn't take Lala Shamil for this. Okay, he made him, harakar means he made him fail in it. So now what happens? Already Lala Shamil was not having loss. Now on top of that, he's not selected as head also. So Seth Dunichand has actually namak chidakna on him. Ghaav par namak chidakna. Okay, he's already sad, and on top of it, another difficulty. Next, talwar खींचना. तलवार खींचना meaning लड़ाई के लिए उद्धत रहना. लड़ाई के लिए उद्धत रहना. सेंटेंस, वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन खेतों के बंटवारे को लेकर दोनों में जब देखो तलवारें खींच रहती है. लड़ाई के लिए उद्धत रहना मीन्स ऑलवेज रेडी टू फाइट. ओके, सो वैसे तो अजय विजय, देयर आर टू पीपल, अजय एंड विजय, एंड दे आर सगे भाई, दे आर blood related brothers. Okay, they are both brothers, Ajay and Vijay. They are very good actually with each other, but when there was kheton ke batwara, okay, khet means land, so when there was a batwara means to divide, so when there was division of land, what happens? They both talwar kheenchna, they both are in fight with each other. Okay, next one I have not by mistake, it's not in bold. Okay, अंधे के हाथ बटेर लगना. अंधे के हाथ बटेर लगना मीनिंग योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना. मीन्स you don't have the योग्यता, you don't have that status to own something, but still you get a मूल्यवान वस्तु.
Okay, you are not actually in having a status or a position to hold something so costly, मूल्यवान वस्तु, costly thing, but still you own it. That is the meaning of the अंधे के हाथ बटेर लगना. Let's see the sentence. वैसे तो शर्मा जी को कार्यालय का कोई काम नहीं आता है, लेकिन चौधरी जी के अस्वस्थ होने के कारण विभागाध्यक्ष का चार्ज और मिल गया. इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना. So actually there is a Sharma ji who is not very good in Karyalay, in all the job he has to do. But since Chaudhary ji, another person, aswasth means he is not feeling well. So since Chaudhary ji is not feeling well, that post has been given to Sharma ji, though he actually doesn't know anything about the job. So that is what Sharma ji has been got, andhe ke haath bate lagna, because he doesn't know the job but he has got that. Okay, next, चुल्लू भर पानी देने वाला. चुल्लू भर पानी देने वाला मीनिंग मुश्किल वक्त में मदद करने वाला. मुश्किल वक्त में मीन्स इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल वक्त में मदद करने वाला, पर्सन हु हेल्प्स ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम. सेंटेंस, पड़ोसियों से बनाकर रखो वीर सिंह, अभिमान अच्छा नहीं होता, कल कोई दिक्कत आई तो कोई चुल्लू भर पानी देने वाला ना होगा. So पड़ोसियों से, with your neighbors you have to live in a very good manner. Okay, बनाकर रखो वीर सिंह. वीर सिंह मीन्स लिव इन अ गुड मैनर विथ योर नेबर्स. अभिमान अच्छा नहीं होता. इफ़ यू शो योर प्राइड, अभिमान, it is not good for you. If you know remain in having pride from your neighbors, you just stand there, you're not having any contact with them, then it's not good for you. Why? कल कोई दिक्कत आई, if any difficulty is coming in on your way, कोई चुल्लू भर भी पानी नहीं देगा. Nobody will be there to stand with you. That is the meaning of chullu bhar pani. So if you stand in pride in front of all your neighbors and not keep a good relation with them, chullu bhar pani bhi koi nahi dega. Nobody is going to help you in those times. Next, दांतों पसीना आना. दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी में पड़ना. To remain in a very difficult position, बहुत परेशानी में पड़ना. सेंटेंस, बेटी की शादी करने में रामपाल जी को दांतों पसीने आ गए. So for the daughter's wedding, Rampal ji, he had दांतों पसीना आना because it was very difficult for him. Of course, during weddings it is the parents who face a lot of difficulty. Next, लोहे के चने चबाना. लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किलों का सामना करना. To face a lot of difficulty. See, just note that in different muhavres, pareshani, mushkil, the same thing repeats, in a different manner, slightly different manner. So you have to be very careful while learning. लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किलों का सामना करना. टू फेस, सामना करना, टू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. सेंटेंस, रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में अंग्रेज़ों को लोहे के चने चबाने पड़े. टू actually fail Rani Lakshmibai. Okay, to win over Rani Lakshmibai, Angrez, that is the British people, they had to lohe ke chane chabana. They had to face a lot of difficulty. Okay, next, chakkar khana. Chakkar khana means भुलावे में पड़ जाना. Okay, भुलावे means actually forgetting everything. So a person who falls into getting forgotten everything is what chakkar khana means. भुलावे में पड़ जाना. Sentence, ठगने गहने दुगने करने का लालच देकर ऐसा चक्कर चलाया कि मोहल्ले की कई औरतें अपने जेवरों के हाथ धो बैठी. Okay, sorry. So thug means a person who is a deceiver, a person who cheats, like a thief or something. I was just looking for the meaning of thug because I couldn't understand at first. So ठग ने गहने दुगने करने का लालच देकर ऐसा चक्कर चलाया. So a thug, as I said, is a deceiver, a person who cheats. So thug says that I am going to make it double. दुगना करना means to make double. लालच देकर, लालच means actually kind of being in need of something. You are in need of something very much, very eagerly you're waiting for something. It is known as lalach dekar. So this person thug says to the people, mohalle ki kai औरतें, women of the village, that I am going to double your gehne, double your jewelry, so give it to me. So now all the mahilaएं give it to them, but what happens? Chakkar kha gaye. Okay, they have been all actually cheated by thug. Okay, भुलावे में पड़ जाना means to get cheated. Okay, to get in something that has you are being cheated because of someone. Okay,
सो ठग ने गहने दुगने करने का लालच देकर ऐसा चक्कर चलाया कि मोहल्ले की औरतें अपने जेवरों से हाथ धो बैठे. एक्चुअली हियर इज अ मिस्टेक. दिस सेंटेंस इज नॉट ऑन चक्कर खाना. Yeah, there is chakkar chalaya. I'm sorry. I thought maybe I couldn't see chakkar khana here. So chakkar chalaya here, the chakkar chalane wala kaun hai? Thug hai. Okay. This is about thug. Okay. Thug is the person who is actually chakkar chalana. But here what we have to notice is that this is chakkar chalana, a person who is actually making other people fool. But the muhavre is chakkar khana, bulave mein pad jana. Okay, chakkar khana. There is a difference between chakkar khana, because a person who is actually being cheated is chakkar khana, and the person who is doing something is chakkar chalana. The person who is making the chakkar means, as I said, to cheat someone. Okay. Anyways, next मुहावरे. आटे दाल का भाव मालूम होना. आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाइयों का सामना करना, to face the difficulty. As I said, difficulties, मुहावरे, many are there, so you have to be careful. Different, just slight difference are there in each one of them. Okay, so to face कठिनाई, to face difficulties, आटे दाल का भाव मालूम होना. सेंटेंस. बाप की कमाई पर बहुत ऐश कर ली तुमने, अब खुद गृहस्थी का बोझ उठाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा. इट्स रिटन आटे दाल, इट इज आटे. ओके ओके. सो बाप की कमाई. ओके, ऑन द अर्निंग्स ऑफ योर फादर यू हैव लिव्ड अ लॉट इन अ लग्जूरियस लाइफ. ऐश कर ली. Okay, luxurious life. अब खुद गृहस्थी means now spend for your house गृहस्थी on your own, and that is the time when you will know आटे दाल का भाव. Okay, how much difficult it is, that is the time you will get to know. Next, ज़मीन पर पाँव ना रखना. ज़मीन पर पाँव ना रखना. पाँव, feet, not to keep on the land. Meaning बहुत खुश हो जाना. So बहुत खुश हो जाना, to be very happy. ओके. सेंटेंस. बेटे की सरकारी नौकरी की खबर सुनकर गुप्ता जी से तो मानो पाँव ज़मीन पर ना रखे जा रहे थे. सो व्हेन गुप्ता जी गेट्स टू नो अबाउट सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब ऑफ हिज सन, what happens? His feet is not on the land, means he has become very happy. हाथ पाँव फूल जाना. हाथ पाँव फूल जाना, मुश्किल समय में घबरा जाना. To get scared during difficult times. मीनिंग, फेरों के ठीक पहले दामाद ने कार की मांग कर डाली तो वर्मा जी के तो हाथ पाँव फूल गए. सो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फेरे, स्पेशली इन हिंदूज, at the time of wedding they have fere, right? They walk around some fire that is lit in between. So that is known as fere, to walk, when they walk around them. So at that time, just before fere, just before the final thing of getting married, damad, that is son-in-law, asks the father-in-law for the car's key. Just imagine, just before the marriage, he's saying, okay, now give me the key for a car. He wants to have a car from his father-in-law. So father-in-law is haath paav phool jana. He got very scared. Okay, now this is the end of muhavre on the chapter Bade Bhai Sahab, which has most of the muhavres. Next is Tantara Vamiro Katha. Okay, first सुध बुध खोना. सुध बुध खोना, अपने बस में ना रहना. To not stay in control of yourself is सुध बुध खोना. सेंटेंस. लता सुरेश के प्रेम में इस तरह पागल थी कि बस अपनी सुध बुध ही खो बैठी. ना खाने का होश रहा, ना पहनने का, जब देखो बौराई सी घूमती रहती थी. सो लता इज a girl who is in love with Suresh, and she is in so much of love that sudh budh kho बैठी. She has actually she's not in her control. She cannot think about anything else. She's not eating properly. All her things are just not happening in proper way. जब देखो बौराई सी घूमती, means बौराई means just like a mad person. She's just walking around. Okay, next one. बाट जोहना मीनिंग प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना. इधर राइट, प्रतीक्षा करना और इंतज़ार करना, सेम मीनिंग. टू वेट. ओके, इंतज़ार और प्रतीक्षा मीन्स टू वेट. सेंटेंस. जब से बुआ जी को खबर मिली है कि उनका बेटा फ़ौज से छुट्टी लेकर घर आने वाला है, तब से बस उसी की बात जोह रही है. आंखें हैं कि दरवाजे से हटती नहीं है. सो जब से बुआ जी,
once Buaji gets to know that her son is coming from Fauj, from army, from military, on vacation, on छुट्टी, तब से बस उसी की बात जो हो रही है, and she's just प्रतीक्षा करना, वेटिंग, बात जो हो रही है अबाउट फॉर हर सन. आंखें हैं कि दरवाजे से हटती नहीं, एंड हर आईज आर जस्ट ऑन द दरवाजा, ऑन द डोर. ओके, शी इज़ वेटिंग सो मच. नेक्स्ट, खुशी का ठिकाना ना रहना. खुशी का ठिकाना ना रहना मीनिंग बहुत अधिक प्रसन्नता का होना. टू बिकम वेरी वेरी हैप्पी, प्रसन्नता, हैप्पी. सेंटेंस, अपने बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने की खबर सुनकर शर्मा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. That much is enough. You don't have to write more actually. Anyways, you don't have to write the sentence. I'm saying that is enough actually in a sentence. Anyway, listening to the news of Sharma ji's son getting selection in engineering college, what happens? Sharma ji की खुशी का ठिकाना ना रहना means he is that very happy. नेक्स्ट, आग बबूला होना. आग बबूला होना मीनिंग अत्यधिक क्रोधित हो जाना. टू बिकम वेरी वेरी एंग्री, क्रोधित. माता कैकेयी द्वारा षड्यंत्र कर भाई राम को वनवास की बात पता चलते ही भरत क्रोध से आग बबूला हो उठा. उसने अपनी माता को जी भरकर खटी खोई सुनाई. सो माता कैकेयी द्वारा, कैकेयी इज द नेम ऑफ अ मदर, सो फ्रॉम हर द्वारा भाई राम को वनवास की बात पता चलते ही. सो भाई राम, ब्रदर राम, I mean a person from his mother gets to know that his brother Ram is going for vanvas. Vanvas means to stay in forest for many days, fasting. Okay, so when he gets to know about that, Bharat gets very angry. Okay, Bharat gets क्रोध से आग बबूल हो उठे. He becomes very angry. And what did he do? माता जी को, to his mother, खरी खोटी सुनाई. खरी खोटी सुनाना we had seen earlier, to scold. Okay, next, राह ना सूझना. राह ना सूझना मीनिंग कोई उपाय समझ में ना आना. उपाय मीन solution. Okay, so to not understand which solution to choose is राह ना सूझना meaning sentence. जीवन भर की कमाई उस धोखेबाज की बातों में आकर 6 महीने में 2 गुनी वाली स्कीम में लगा दी. अब ना मेरे पास पैसा है ना वो धोखेबाज ही कहीं नजर आता है. मैं क्या करूं, मुझे तो अब आजीविका निर्वाह की कोई राह नहीं सूझती. सो जीवन भर की कमाई, द एंटायर लाइफ टाइम्स अर्निंग्स. आई हैड हर्ड अ धोखेबाज, अ चीटर्स, whatever the cheater said, I heard him, and what I did, the cheater says that in 6 months I'm going to double your money, and now in that scheme a person has put his money and na paisa hai, now there's no money, and धोखेबाज को नज़र नहीं आता, he's not able to even see that cheater. मैं क्या करूँ, मुझे तो अब आजीविका निर्वाह, for the living ahead, living ahead, my earnings for the life ahead, what to do, राह नहीं सूझती. he is not able to find a solution for it. Next, सुराग ना मिलना. सुराग ना मिलना meaning कुछ पता ना चलना. to not understand, and I mean to not get to know about something or someone. Okay, सेंटेंस, पुलिस ने सारी रात बस्ती में छानबीन की, फिर भी दंगा फैलाने वाले बदमाशों का कोई सुराग ना मिला. So the entire night police was actually finding for the person who had done danga, who had done some kind of fight, but the police couldn't, surag na mila. Okay, they couldn't find. नेक्स्ट चैप्टर, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले. दीवार खड़ी करना. दीवार खड़ी करना, आपस में बंटवारा कर लेना. टू मेक डिविजन, बंटवारा विद इन अमंगस्ट ईच अदर, आपस में. ओके, सेंटेंस, पिता की मृत्यु हुए 4 महीने भी ना हुए थे कि शर्मा जी के बेटे ने घर में दीवार खड़ी कर ली. सो विद इन 4 days ऑफ द फादर्स डेथ, Sharma ji's son, he has brought a wall in between in their house for division. सच कहा है, भाइयों में प्यार भी माँ बाप के जीवित रहते ही रहता है, फिर तो बहुएं बंटवारा करवाने में देर नहीं लगाती. So it is said truth that till your माँ बाप, your parents are alive, जीवित रहते हैं, only till then there will be love between the brothers. After that what happens, the daughter-in-laws, they make division, बंटवारा करवाना. Okay, दीवार खड़ी करवाना.
Okay, that means there has been a division. Okay, actually that first sentence is enough. पिताजी की मृत्यु हुए 4 महीने ना हुए थे कि शर्मा जी के बेटों ने घर में दीवार खड़ी कर ली, बिकॉज इट इज दीवार खड़ी करना इज द मुहावरा. नेक्स्ट, बेघर करना, आसरा छीन लेना. आसरा मीन्स someone's support, someone's for example someone's house when you snatch it from them. Okay, someone's support, you're snatching it, it is beghar karna. Asra means support. मुखिया जी ने खुशीराम की ज़मीन तो धोखे से हड़प ही ली, उसका घर भी गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया. आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी कि गरीब आदमी के बल बच्चों को घर से बेघर करना चाहते हैं. सो देयर इज़ अ मुखिया जी who has actually taken hadapli means he has snatched away by cheating someone धोखे से. And what he did is आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी हुआ. What is so much of दुश्मनी? Why is there this much of enmity, दुश्मनी, that someone's house, okay, बाल बच्चों means a house where their son, I mean their family is living, their kids are living. What is so much of enmity that you have snatched it from them? बेघर करना. डेरा डालना मीनिंग स्थायी रूप से बस जाना. ओके, व्हेन यू स्टे देयर, ओके, टेम्पररीली, व्हेन यू स्टे समवेयर टेम्पररीली, दैट इज नोन एज डेरा डालना. हर साल गांव में नदी पर से कुछ मजदूर काम करने आया करते थे और फसल काटने के बाद लौट जाते थे, किंतु इस बार तो उन्होंने गांव में ही डेरा डाल दिया. ओके, डेरा इज मिसिंग. मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है. सो एक्चुअली विलेज, गांव में नदी पर से कुछ मजदूर काम करने आते हैं. फ्रॉम विलेज एक्चुअली सम पीपल कम एंड दे डू देयर वर्क एंड दे गो बैक. ओके, दे डू फार्मिंग एंड गो बैक. बट दिस टाइम व्हाट दे हैव डन इज दे हैव कम एंड स्टार्टेड स्टेइंग इटसेल्फ. डेरा डाल दिया. सो मुझे तो दाल में कुछ काला. सो दाल में कुछ काला लगना इज अगेन अनदर मुहावरे. यू कैन नोट इट डाउन. मीन्स यू फाइंड समथिंग फिशी इज द मीनिंग. ओके, दाल में कुछ काला लगना. ओके, नेक्स्ट चैप्टर, जैन की देन. देयर इज ओनली वन मुहावरे फ्रॉम दिस चैप्टर. सन्नाटा सुनाई देना. सन्नाटा मीन्स साइलेंस. साइलेंस सुनाई देना. कोई शोर ना होना. नो नॉइज एट ऑल. ओके, अत्यधिक शांत होना. वेरी पीसफुल सराउंडिंग. पीसफुल, शांत. सेंटेंस, पिछले साल गांव में ऐसी महामारी फैली कि हर घर से कोई ना कोई अर्थी उठी, सारे गांव में सन्नाटा सुनाई देता. सो लास्ट ईयर इन विलेज देयर वाज अ वेरी महामारी, मीन्स अ वेरी deadly disease just like coronavirus, which actually arthi uthi in every house. In most of the houses there were death of people. So due to that in sare gaon, in the entire village, there was sannata sunai dena, there was silence. Next chapter, कारतूस. तंग आना मीनिंग परेशान होना, टू बिकम इन डिफिकल्ट. परेशान होना, टू गेट टेंस्ड. सेंटेंस, वर्मा जी ने अपने बेटों से कहा कि अगर मिलकर शांति से साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ. रोज रोज की चिक चिक से तो मैं तंग आ गया हूँ. सो वर्मा जी सेज टू हिज सन दैट his sons that if you can't live peacefully, please leave the house, because I cannot hear your chick chick daily. Means whatever fight that happens, with your daily fights I have been tang aa gaya hu. Okay, I have been in difficulty. I am fed up of it. Okay, next, कामयाब होना, सफलता पाना. कामयाब, सफलता all same meaning, that is success, to become successful. कामयाब होने के लिए जीवन में ईमानदारी का रास्ता चुनो भाई. इस धोखेबाजी के रास्ते पर चलकर आखिर में पछताना ही पड़ेगा. सो इन ऑर्डर टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, प्लीज लिव इन ईमानदारी. ओके, स्पेंड योर लाइफ इन ईमानदारी मीन्स इन जस्टिफाइड मैनर. ओके, इफ यू डू सम काइंड ऑफ चीटिंग, you don't think, never think that you're going to be successful. You will get failure only. नेक्स्ट, आँखों में धूल झोंकना मीनिंग धोखा देना, टू चीट समवन. ओके, निकल भागना मीन सेम, टू चीट समवन एंड रन अवे फ्रॉम देयर. नेक्स्ट, सेंटेंस, चोर ने दरोगा से कहा कि उसे लघु शंका लगी है और इस बहाने से झाड़ियों के पीछे जाने की अनुमति मांगकर भाग गया. दरोगा की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया.
सो चोर ने दरोगा से कहा कि उसे लघु शंका लगी है. सो नाउ द thief is saying to daroga means police. He is making some excuse and he goes behind the jhadi, behind a bush. From there he actually cheats the police and runs away. Okay. काम तमाम करना meaning मार डालना या वध करना. Same only. मार डालना means to kill, वध करना also to kill. काम तमाम करना means to kill. सेंटेंस आतंकवादी ने जिस मकान में शरण ली हुई थी भारतीय सैनिक ने उसी मकान में घुस आतंकी का एक ही गोली से काम तमाम कर दिया. सो देयर वाज आतंकवादी hijackers in a shop. Hijackers or terrorists, you can say. Of course, here it is terrorists. So, Atankwadi terrorists, they have entered some shop, and now what happens? Sainik, that is military people, army people, they enter the same shop, and with one goli, one bullet itself, they Atankwadi ke kaam tamam kar diya. They have killed the Atankwadi terrorist. Next, nazar rakhna. Nazar rakhna meaning निगरानी रखना. ओके. सेंटेंस जेलर ने सिपाही से कहा कि इस चोर पर नज़र रखना, ये पहले भी जेल से फरार हो चुका है. ओके. नज़र रखना इज़ वेरी इजी फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, टू कीप एन आई ऑन समवन. So the jailer says to the sipahi, a person who is guarding the jail, that please keep an eye on this chore, on this particular thief, because before or earlier also this person has been left. He actually escaped the jail. Okay, so nazar rakhna, keep an eye. Next, last one, jaan bakshna. Jaan bakshna meaning hatya na karna, mrityu dand maaf karna. Hatya means to kill. So to not kill someone, hatya na karna, ya phir mrityu dand maaf karna. The mrityu dand means to kill a person when there is a punishment of getting hanged or being killed. To maaf karna, when you actually forgive a person who actually has to be hanged or killed. That is the meaning of जान बख्शना. सेंटेंस दरबारी ने बादशाह से कहा कि जान बख्श दी जाए तो वह बादशाह को एक बुरी खबर सुनाना चाहता है. सो देयर इज अ दरबारी a person in the court darbar of the king Badshah, and darbari says that if you do jaan bakshdi, if you save from getting from the person getting punishment or getting hanged, if you save that person, then there is a bad news to be said to you. There is some kind of bad news. If you save my life, I am going to give you that bad news, whatever it is. So Darbari says to Badshah king. Okay, now this is the end of chapter wise muhavris. How much ever I could, I have included. Maybe there are more, I don't know. So anyway, you learn these and try to learn some more from your grammar part also. I hope this video has really helped you, and if you have any doubt, ask me in the comment section. And all the best for all the preparations you are doing right now. I know it's a very difficult time, and especially in this pandemic situation where all of you are in the house and trying very hard to score marks in your exam. And I feel very happy when I get to know that in the comments when you mention that, ma'am, I have scored this much marks and it is because of you. Your video has helped me in the last moment. I really feel happy and blessed, and thank you so much. Keep supporting my videos. Bye-bye.